Hi. So again, we're back with another video of lifespan. See, I'm creating this video right now because अभी तक हमने important question, concept, major parts जो हमारे आते हैं एग्जाम्स में वो कवर किए हैं and theories कवर की है. But right now, if anybody has any doubt in the overall lifespan, we are going to cover it unit by unit, जैसे हमें इग्नू ने मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग, so that we can be satisfied that we have learned everything, at least which is mentioned in that book so far. Still, if you guys have any concern, any issue, any doubt, feel free to reach out to me through comment section. I'll definitely address your request. So, without wasting any time, let's move forward towards our concept. फर्स्ट हमारा यूनिट है लाइफ स्पैन का, अ, जिसके अंदर यूनिट वन का जो टाइटल है दिस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, lifespan perspective, method of studying, development, and characteristic of development. ठीक है, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, what includes in the structure, introduction, objective, concept of development, क्या उसके गोल और चेंजेस होते हैं, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस, क्या क्रिटिकल पीरियड है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी चार चीजें मेजरली दी हुई है, एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इशू जो इसके अंदर आते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में इन द लाइक ओवरऑल लाइफ स्पैन, कितने डोमेन हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, डोंट बी कंफ्यूज राइट. ठीक है, जिस लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे हैं इट इज नॉट फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म, इट्स फॉर अस ह्यूमन, so that's why आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का भी नाम मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, fact of development, research method for lifespan development, next obstacle in studying lifespan development, जो हमने previous videos में भी बात करी है, you're gonna connect the dots. इसके बाद इसका पूरा summary, let's sum up, unit के कुछ questions, suggested reading and references, answer to self assessment questions. अगर आपको solve करने हैं तो, and if you guys want me to solve it, I'll prepare the separate one for them. But अभी हम सिर्फ यहाँ पे theory cover करेंगे. ठीक है, concepts cover करेंगे. Sorry. Okay, so introduction said from the moment the human child is first conceived to the individual dies, they keep changing constantly and developing. While some of the changes humans undergo are as a result of chance, incident, and personal choice. The vast majority of life changes and stages the human passes through are due to certain common biological and psychological factors, partially inherited and partially environmental, and are shared by all people. Development refers to the biological and psychological changes that occurs in human beings between birth and end of adolescence. हालांकि ये adolescence तक नहीं है, थ्रू आउट लाइफ होता है, ओल्ड एज तक भी होता है, बट यहाँ पे adolescence अभी दिया हुआ है. अभी आपको उसको आगे भी कवर करेंगे. As the individual progress from dependency to increasing in autonomy, because these development changes may be, आगे बढ़ भाई, may be strongly influenced by genetics and environmental factors during prenatal life, and these are the part of study of child development. ठीक है, प्रीनेटल लाइफ वो होती है जब हम पैदा नहीं हुए होते हैं, उससे पहले के जो हम 9 महीने 8 महीने जितने भी महीने में पैदा होते हैं, एवरेज 9 मंथ्स जो एक नंबर है, दैट्स कॉल्ड प्रीनेटल पीरियड फॉर अ पर्सन. एंड these are the parts of study of child development. यही पार्ट है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के. डेवलपमेंटल may change occur as a result of genetically controlled process known as maturation. Maturation सबको पता होना चाहिए guys कि डेवलपमेंट में ये जो चेंज होते हैं उसका जो रिजल्ट लाइक जैसे कि जो जेनेटिकली है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मैचुरेशन. कूल, जैसे कि आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कितनी बढ़ेगी, यू इवन डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट, ये जेनेटिक्स की वजह से भी होता है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड मैचुरेशन. और एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर एंड लर्निंग,
but most common involves an interaction between the two. Developmental psychology refers to development throughout the lifespan, and pediatrics, the branch of medicine relating to the care of children. Okay. In this unit, we are also going to introduce the concept of lifespan development. It deals with the important developmental stages that human beings go through: birth, prenatal, infancy, adolescence, adulthood, old age, and fortunately death. As the human grow up from one stage to another stage, they learn to make use of their body parts, learn how to express themselves and communicate with person, learn how to maintain relationships with others, and how to love and care for others. In this unit, we will be focusing on the concept of development, issues, and stages. In development of human, and then put forward the concept of lifespan development and its characteristics, the theories of child development overall. अब इसके अंदर आगे अब हम जो जैसे बढ़ेंगे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ, व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रखा हुआ है. Once we go through this unit, we will be able to define the concept of human development, this about the growth and development, the difference between them. We'll be able to explain the lifespan perspective. We'll be able to explain the significant issues involving the process of human development and can identify the stages of important domains of development, analyze the characteristics, features of lifespan development, and explain the research method and its obstacle in studying the lifespan. Cool, guys? Cool, 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 cool. Next is concept of development. Development describes the growth of human throughout the life from conception to death. It refers to the development as pattern of change over time. It does not just involve the biological and physical aspect of growth, but also the cognitive and social aspect which is related to the development. The scientific study of human development seeks to understand and explain how and actually why people changes throughout life. This field examines changes across a broad range of topics, including motor skills and other psychophysiological process, psychological, I'm so sorry. Cognitive development refers to the area of problem solving, moral understanding, conceptual understanding, language acquisition, social personality, and emotional development, and self-concept and identity formation. Growth is defined as an increase in size. In other words, development is defined as a progression towards maturity, even though development is a continuous process with the competencies developing and then disappearing only to appear at a large later age. It is not continuous in the sense that is increased constantly, but rather in a series of waves with whole segment of development reoccurring repetitively. For example, newborn walk if held and then disability disappear only to reappear at 8 or 9 months of age, right? Goals of development. Oh, sorry. The goals of development is to enable people to adapt the environment in which they live. Self-actualization is essential to achieve these changes. It plays an important role in mental health. People who make good personal and social adjustments must have opportunities to express their interests and desires in ways that gives them satisfaction, but at the same time conform to accept standards. Lack of these opportunities will result in frustration and generally negative attitude towards people and life in general. Now, towards growth and development. Growth refers to the development of children from birth to adolescence, from newborn to teenager. Parents often have question if the children are developing normally. Also, WHO, World Health Organization, is also coordinating an international effort of developing child growth standards from infant to young children, like 0 to 5 years. Okay. There is a process, child development, which makes a growth curve. Growth curve is defined as a statistical curve derived from plotting weight and height against chronological age to comparing an individual child's growth pattern
with the average age of growth. In short, we can say that personality is influenced by many factors, and these factors are involved in the development of personality of a child. The strongest factor in the process of development of personality is society and the child's experiences in the society and in the environment. Most of the children's learning comes from the society, their surrounding, and their experiences. Although these experiences are supervised, supervised by the parents and teachers, more often they occur in spontaneous family or neighborhood settings. As such, as such, one find that every child is different from other. Another factor that influences personality is the cultural factor. So everything from music, television, and incidental remarks overhead, but hardly understood by the child to deliberate modeling and training. The child is encouraged to embody the typical or ideal personality of her culture. Place is a third factor, which is involved in the development of a child. In addition to the biological factor, as children grow up from one stage to another, they learn to make use of their body parts, learn how to express themselves and communicate with others. They also learn to from relationship with others, how to care for others, how to love, how to work, how to behave, kind of. Over the years, people who study children have created theories to explain how children develop, while these theorists realize that every child is special and grow in his or her unique way. They also have recognized that there are general patterns that children tend to follow as they grow up, and these patterns have been documented by the theorists. All these are four areas in which children growth and development take place, and these are discussed below. The first is physical, second is psychological और cognitive भी कह सकते हैं आप इसको. थर्ड क्या है guys? थर्ड है हमारा social and emotional, sexuality and gender identity. फटाफट से हम करते हैं. The physical growth is perhaps the most obvious. Children grow in height and weight over the years, and their appearances changes a great extent during puberty. Children also develop certain physical abilities during their progression towards adulthood, including crawling, walking, running, possibly writing. The motor skill coordination became well refined and they can shoot across the target relatively more accurately. That's called physical development. Psychological cognitive की अगर बात करें तो children also develop psychologically and cognitively as their brain absorb more information as they learn how to use that information. Literally, uh, children have to learn how to think on purpose and to process or organize all the information that comes to them from the environment. They must learn how to solve problems, to talk, and to complete mental tasks such as remembering telephone numbers or using computer, using anything. Social, social and emotional, both contain together actually. Children grow socially and emotionally. They learn how to interact, play, work, and live with other people, such as family, friends, teacher, and employees. They learn how to understand both their own feelings and that of others' emotion. They also learn ways of dealing with strong emotions in order to function well as independent adults. Children must developing a sense of self-esteem as they go through the long process of figuring out what shape their identity will take. They develop a sense of morality as they learn the difference between the right and wrong. Sexuality and gender identity. Children also develop sexually and from a gender identity. This development is unique because it spans development across the other. Like physical आता है, psychological आता है, social भी आता है. Early on, early on, children learn how their bodies work and look, and what it means to be a boy or a girl. They learn how boys and girls are different. As they grow older and enter adolescence and puberty, they continue to learn their bodies work sexually and how to responsibly handle their sexuality.
so as to balance their sexual desires and appropriate behavior. They continue to decide for themselves what it means to be masculine or feminine throughout their lifespan. Different theories have come to different conclusions, learning how exactly children develop across the various development changes. Some theories believe that children develop smoothly and continuously, but some other theories believe that children develop more discreetly in a series of stages, each which is fairly stable. Now, critical time. There are certain critical period of development, such as difficult period or critical period. It is said that children who do not get special stimulation during their time of receptivity may get stuck at this period. For instance, children learn to trust the pattern. If parents are constantly loving, affectionate, and give the child care and love unconditionally, in such cases, the child learns to trust its parents and from then onwards, other adults in the environment. However, if the child is neglected and abused, not given care, affection, love, or he or she may develop distrust of parents, and this distrust will transfer to other adults in the environment. It must remember that even though the child's development may have been diversely affected, if he or she is given an opportunity uh, to, to be with foster parents who care and love the child, they later develop the capacity to trust others, like other adults, too in course of time. Cool. Lifespan perspective पे आ गए guys हम लोग. Okay. Lifespan refers to the ongoing process that we go through. Lifespan हमें पता है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारा समय है, that comes under lifespan. Cool. अब कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. हालांकि हमें साइकोलॉजी किसने क्या 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 दिया है क्या नहीं दिया है वो भी दिया हुआ है, तो लेट्स कवर इट आउट. लाइफ स्पैन रेफर टू दी ongoing process that we go through while growing up. It is a period of time from conception extended to death. Studying lifespan development is important because it helps in describing and explaining the mysteries of human development. Lifespan development includes issues such as the extent to which development occurs through the gradual accumulation of knowledge versus stage like development, or the extent to which children are born and innate mental structure versus learning through experiences. प्लेटो एंड एल्बर्टो का यहाँ पे ये थ्योरी है गाइस. ठीक है, मैं आपको रेफरेंस देती रहूंगी. Many researchers are interested in the interaction between personal characteristics, the individual's behavior, and environmental factors, including social context and their impact on development. The scientific study of development is important not only to psychology but also to sociology, education, and healthcare. By better understanding how and why people, oh, I'm sorry, how and why people changes and grow, one can then apply this knowledge to helping people live up to their full potential. Lifespan development is defined as a pattern of change that begins at conception and continue through the life cycle. Now, lifespan development can also be defined as a methodical, intra-individual change associated with progression corresponding to age, the development process, in a manner implicating the level of functioning. Lifespan developmental psychology is a field of psychology which involves the examination of both constancy and the change in human behavior across the entire life. हमको कांस्टेंट क्या चीजें रहती है वो भी ध्यान में रखनी है, और क्या क्या चेंज हो रहा है दैट तो वी आर ऑलरेडी डिबेटिंग ऑन और शेयरिंग व्यूज अक्रॉस. ठीक है, that is from conception to death. So we have person Belts, Baltus. In 1987, development occurs in the different domains such as the biological, changing our physical being, social,
हमारे रिलेशनशिप में इमोशनल हमारे इमोशन में अंडरस्टैंडिंग में एक्सपीरियंसेस में कॉग्निटिव चेंज thought process. Some development psychologists prefer to restrict the notion of development only to change, which leads to qualitative recognition in structure of behavior, skills, or ability. It was Crane who gave us that point on in 2000. Lifespan development is a process in which the progression initiate with the emergence emergence of a fetus from one celled organism. As the unborn child entered the world, the environment in which the child exists begins to influence the child's development, which was Educational Foundation 2001. ये हमको बताया गया था उस वक्त. The developmental period are child and adolescence, early adulthood, middle adulthood, and late adulthood. The transition in each of the development period involves a necessary change in the character of the individual's life and sometimes it takes up to 6 years to complete the change. It was written by Smith in 2009. Cool. The transition deals with the common development stages that human being pass through birth, infancy, adolescence, adulthood, old age, and death. अब understanding ले लेते हैं. Biological we all know, right? Psychological forces, socioculture, lifespan forces. Cool. अब हमारी issues क्या क्या है lifespan development भी we also have discussed that continuity versus discontinuity कि हमारी जो development होती है वो continuous basis पे होती है या फिर stages wise होती है you know ये एक ये एक debate है stability and changes कि stable रहती है हमारी growth या change होती रहती है you know multi directional है multi dimensional है नहीं है kind of though it is but still it is a debate नेचर वर्सेस नर्चर हम जो नॉलेज ले रहे हैं वेदर इट्स नेचुरल हमारे पास जेनेटिकली है जीन से सीख कर आए हैं या फिर नर्चर प्रोवाइडेड बाय नर्चर लाइक our own experiences our environment that's also a debate and that was the very first debate let me tell you guys so this was the issues stages of development हमने पहले भी अभी पढ़ी है childhood and adolescence यानी कि birth to 20 एज इसके अंदर भी 5 स्टेजेस आती है ठीक है अर्ली अडल्टहुड 17 to 45 years, मिडिल अडल्टहुड, देन लेट अडल्टहुड या फिर हम इसको ओल्ड एज भी बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पे भी एक थ्योरी है टेनेंट एंड कॉग्सन की 1995 में दैट्स डिफिकल्ट वन दो बिकॉज इट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट एक्चुअली ठीक है डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वी ऑल नो डोमेन्स आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल है कॉग्निटिव है ना बायोलॉजिकल है फिजिकल एंड सोशियोलॉजिकल है इमोशनल है ठीक है ये सब हमारी डोमेन्स है और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल वाले में आती है ठीक है तो ये डोमेन है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू डीप बट इफ गाइस हैव एनी इशू इनटू इट यू कैन आस्क अब ये सेल्फ असेसमेंट है हमारे पास करने के लिए ठीक है लेट्स ट्राई changes occur from conception to death yes true children's learning comes from the society his surroundings and his experiences yes true these are four areas in which children grow. Yep, two interactive forces that combine to shape human development. No, it's false. There are multiple forces actually. Two interactive forces, same question, hai, guys. Individual passes only one stage throughout the life. No, false it is. As a child grow up, adjustment to self, others, and environment are important tasks which becomes increasingly complex. That's true. Psychological domain focus on adjustment of the individual to the environment.
That's not uh, partially true, so we can keep it true. ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के 12 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, राइट? सबसे पहला है हमारा पास लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट। आप इसको बुलेट पॉइंट्स में बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आप डिफाइन कैसे कर रहे हो लाइफ स्पैन को। इजी तरीका है याद करने का कि लाइफ स्पैन लाइफ लॉन्ग, सिंस यू आर अ fetus, प्रीनेटल पीरियड से लेकर आपकी डेथ तक, whatever changes occurs around you related to you, that is लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग है, इसके अंदर यही बताया गया है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में हम सिर्फ कोई एक ही चीज, एक ही तरीके की चीज कंसिडर करें कि नहीं नहीं बायोलॉजिकल ही डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल ही डेवलपमेंट है। वी कंसिडर मल्टीपल डोमेन्स इनटू, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, डोमेन्स देखो यहाँ पे बताई हुई है, बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है। दीज आर दी डोमेन्स। कॉग्निटिव को आप साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल को आप फिजिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी मेन नेम्स, और ये आपको ऑलमोस्ट हर एक आंसर में लिखना है in lifespan. Let me tell you, remember these words and understand their core value. You will be able to write every single answer in your exam. ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल लाइक इट्स नॉट ओनली इन्फ्लेनेटरी कि सब कुछ सिर्फ बढ़ रहा है या कौन, मतलब या फिर एक डायरेक्शन में नहीं है, या घट रहा है बढ़ रहा है, नो। वी यूज टू ग्रो, देन कांस्टेंट आ जाती है, ग्रोथ कर, पता है ना ग्रोथ कर कॉन्सिडर है, फिर वो नीचे भी जाता है, डिक्लाइन होने लगता है एक एज के बाद। जैसे अभी आप छोटे हो, अभी आपका वेट भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, है ना, बोलने का तरीका और सुधरेगा, साफ बोलोगे, अच्छा बोलोगे। फिर एक एज तक वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है काफी लंबे समय तक। ठीक है, अडल्टहुड में। फिर जब आपकी ओल्ड एज आने लगती है, अडल्टहुड से जब आप ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हो, तो आपका जो ग्रोथ कर का ग्राफ है वो गिरने लगता है, सिमेट्रिक ग्राफ है ये, ठीक है, गिरने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो हम चीजें लूज भी करने लगते हैं, इसकी अब उतना स्टैमिना नहीं है, हाइट कम होने लगती है, झुकने लगते हैं, बॉडी में झुकाव आने लगता है, वेट कम होने लगता है ना, साइक, तो फिजिकल चेंजेस में हम डिक्लाइन होते जाते हैं, थिंकिंग के प्रोसेस से भी। तो दीज आर द थिंग्स, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, इसको प्लास्टिक से इसका मतलब है प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, यू कैन से, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है डेवलपमेंट हमारा। आप जिस चीज के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे उस तरफ मोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपके आसपास सबसे ज्यादा हो रहा है, यू अंडरस्टूड दैट फर्स्ट एंड इवन मोर, यू नो, सो दैट्स व्हाई इट इज प्लास्टिक। क्योंकि होता है ना, इसका कंसेप्ट समझो सकता है, जैसे प्लास्टिक है, जब आप उसको शेप देने लगते हो, आप जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगाओगे, जिस तरीके को उसे बनाना चाहोगे फोर्स से, उस तरीके का बनता है वो। सो दिस इज हाउ यूज टू डिफाइन इट। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज contextual। कंटेक्चुअल से हमारा मतलब है कि सोशल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आवर सोशल लाइफ टू, कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, दैट आल्सो प्रोवाइड्स डेवलपमेंट। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, अभी हम इसमें बहुत अलग अलग डोमेन्स पे स्टडी करते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो दिया हुआ है मैं आपको वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी है, अलग अलग लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज अलग है, स्पीकिंग में भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है, दे हैव देयर ओन मीनिंग, एवरी सिंगल वर्ड हैज देयर ओन मीनिंग, राइट। एंथ्रोपोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, न्यूरो साइंस है, राइट, एआई मशीन लर्निंग है, that's also related to our psychology, कि how exactly we are coordinating with even machine that also has a language, right? So that's why it's multidisciplinary. Development involve growth, maintenance, and regulation. ये तो की रूल है इसका। The mastery of life involves conflict and competition among three goals of human development.
ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन। इसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन चलता ही रहे। ठीक है। डेवलपमेंट, सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। Development is embedded in history. Development is also historically situated and is always influenced by historical condition. The historical time period in which we grow up affects our development. हमारा क्या ट्रेंड रहा है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स की टाइम को भी डिफाइन करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ रहे हैं तो आज ही से है, सिंस टू लॉन्ग, व्हेन यू इवन वाजंट बोर्न। ठीक है। डेवलपमेंट इज एम्बेडेड इन हिस्ट्री, वी जस्ट have learned. Normative as age and graded influences. Biological and environmental influences are the similar for individual in a particular age group. जैसे कि चाइल्डहुड से लेकर प्यूबर्टी तक जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस है और एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो इस एज के लोगों के लिए ऑलमोस्ट सेम तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो नॉर्मेटिव एज, ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। किस तरीके की आपकी हिस्ट्री रही है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एक्चुअली, वो आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर। अभी नॉर्मेटिव एज की, अभी नॉर्मेटिव हिस्ट्री है। ठीक है। जैसे कि डिप्रेशन है, किसी को एज है तो उसको भी हो जाएगी, होता है ना, पास ऑन हो जाती है बीमारी, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट में जैसी चीजें जहाँ आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग। Non-normative events, unusual occurrences that have a major impact on an individual's life. The occurrence, pattern, and sequence of these events are non-applicable to most individuals, like death to a parent at a young age. Non-normative होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो चलता ही आएगा हमेशा या सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, someone's father dies in an early age, it doesn't mean that person is going to be dead in that same round of age. That person can live long, you know. So it depends. तो ये है नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स। तो 11 बताए हुए हैं इसमें, आई एम सो सॉरी, आई काउंटेड 12। फैक्टर्स बहुत है डेवलपमेंट के हमारे, आई गेस ये हमको, ये भी 10 ही में रही। ठीक है। फैक्टर्स सब हम पढ़ लेंगे, मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स है जनरली। हम पढ़ेंगे अर्ली फाउंडेशन आर क्रिटिकल। अर्ली फाउंडेशन को क्रिटिकल इसलिए बोला गया है कि वॉट एवर बिहेवियर वी लाइक क्रिएट इन अर्ली टाइम, दैट मैटर्स, वो आपके एडल्टहुड को डिफाइन करेगी। ठीक है। जो कि आपको एक थ्योरी में भी कहा गया है। ठीक है। सो या नेक्स्ट, रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन डेवलपमेंट इज अदर थिंग। डेवलपमेंट फॉलो डिफाइनाइट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट्स ऑल्सो प्रिडिक्टेबल, राइट, कि अगर ऐसा अभी चल रहा है सीन तो हाउ इट इज गोना बी इन द लॉन्गर टर्म। ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट, ये हम पहले ही मानते हैं। नेक्स्ट इज ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हर एक फेज में आती है। ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो मस्तिष्क से बढ़ रहे हैं, बड़े हैं तो बढ़ना छोड़ दिया, नहीं। बॉडी चेंज होना बंद हो गया, सोशल चेंजेस बंद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर एक फेज में कैरेक्टरिस्टिक बिहेव करती हैं बट डिफरेंटली। ठीक है। हिजार्ड इन ईच फेज, हर फेज के अपने 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 इश्यूज है, चैलेंजेस है। ठीक है। डेवलपमेंट इज एडेड by simulation. While most development occurs as a result of maturation and environmental experiences, much can be done to aid development so that it will reach its full potential. Simulation is especially effective at the time when ability is normally developing, though it is important at all times. Okay. Next is cultural changes affect the development. जो हमने पहले ही पढ़ा है कि how exactly our culture, the family we are living in, the place exactly we are living in, the people around us, how exactly they are.
एंड कैसा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये बहुत। ठीक है। अब उसका नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास, एवरी स्टेज हैज सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशन है हर एज में लोगों को। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एवरी स्टेज हैज सर्टेन social expectation. The individual will be successful in fulfilling these expectations only if he or she is adhering to the rules and regulation of the family and society. It's very easy. Everyone can relate it, right? Traditional belief. Traditional belief about physical and psychological characteristics affect the judgment of others as well as their self-evaluation. So long as these beliefs persist, they have a profound influence on the development pattern. Cool. रिसर्च मेथड है हमारे, लॉन्गिट्यूड मेथड है, क्रॉस सेक्शन मेथड है, सीक्वेंशियल मेथड है, टाइम लैग मेथड है। ये आपको रिसर्च के टाइम पे इजीली ज्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा। ऑब्स्टिकल इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कौन सी एज का करना है, ये सब हमारे चैलेंजेस है। establishing rapport building with the subject. Obviously, baat hai, if you're going to collect a sample from somebody, it doesn't mean that the other person will always provide you their information to you. Okay? That's the other challenge. Appropriate methodology. कौन सा मेथड, इतने सारे मेथड्स है, which one should be applied. ठीक है? Accuracy of data. Data accurate है या नहीं है? What if the information has been given by the other person? I cannot question it every single time, but I also cannot rely on it. Fifth one is ethical aspect. Sum up हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं गाइस। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट जेनेटिकल्स इन दी नेक्स्ट वीडियो। Till the time, if you have any question, anything which you want to ask, let me know. Thanks for watching. All the best for your exams.